Hello, hi, namaste. I am Samir Satpathy and welcoming you to this series. A total series रे move try करिबी physics रो class 12 रो syllabus को पूरा पूरी complete करिया ପାଇଁ and प्रति वीडियो लेक्चर्स पर तुमको लगे कि तुम एक्चुअली फिजिक्स को बुझुछ एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द सिलेबस ऑफ फिजिक्स एंड इट विल हेल्प यू एट द प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन वेरी एफिशिएंटली। ठीक अच्छे तुम सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपेयर कर कि सीएचएसई बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपेयर कर इट विल हेल्प अ लॉट। सो आज आम स्टार्ट करवा सिलेबस फर्स्ट चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। So look at the screen. See, आमर syllabus physics syllabus first chapter basically units से divide है and आमर first unit ना होची electrostatics। ठीक अच्छे that is electrostatics। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट अंडर रे दीटा चैप्टर अच्छे गोटे हूँ चैप्टर 1 दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रिक सेकेंड चैप्टर जो सेकेंड डिवीजन अच्छे दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सो ए यूनिट रो भूमिका बहुत ही गुरुत्वपूर्ण सिलेबस रे हो कि एग्जामिनेशन रे हो। बेसिकली आम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म रो फर्स्ट पार्ट पढ़ा जाऊे। ठीक अच्छे सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रे आम बेसिकली कौन करवा चार्ज विषय पढ़ा तो बहुत बढ़िया जिन कौन 11 क्लास रे जहाँ भी सब फिजिक्स आम पढ़ीचे से आम देखी पारे लाइक इमेजिन करें फिजिकली जो जिन देखी पारे लाइक मुझे तुमको कहीपर कि हाँ गोटे गाड़ी मुव कर तुम्हें गोटे जगह ठिया होच तो तुम उपर कौन कौन फोर्स पड़ पाए कौन गोटे ऑब्जेक्ट गोटे टेबल उपर अच्छी तो तुम इमेजिन कर हाँ फील कर जिनस को बट एठी क्लास 12 फिजिक्स रे फिजिकली कौन जिनस नहीं सेटा तो माइक्रोस्कोपिकली हो तो आमको बेसी रु बेसी इमेजिनेशन पावर बढ़ार अच्छी। ठीक अच्छे कि एमती किसी जिनस होली आउ से हिसाब रे आम पूरा पूरी क्लास 12 फिजिक्स को करेगा। ठीक तो आज आम लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड रो। सो फर्स्ट आम बुझा कि ये जो यूनिट रो ना अच्छी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आर मीनिंग कौन देन आफ्टर वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक्स। सो आमको आज कवर कर इलेक्ट्रिक चार्ज कौन से विषय टे नॉलेज नवा देन चार्जिंग कौन केमती कर बॉडी को से विषय टे नॉलेज नवा देन कौन कौन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज अच्छी चार्ज से सब बुझा। बिफोर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स। तो टिके भलसे देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रे बेसिकली दीटा वर्ड अच्छी दैट इज इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स दे जाक वर्ड रो अलग अलग मीनिंग अच्छी। इलेक्ट्रो माने होची कौन इलेक्ट्रो माने होची चार्ज एंड स्टैटिक्स माने होची रेस्ट। तो आमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रे कौन करार अच्छी स्टडी करार अच्छी चार्ज विषय जो चार्ज की रेस्ट थी चार्ज रेस्ट न रही पारे भल से शुण मुझे कौन कौन चार्ज रेस्ट के रही वी विल एज्यूम दैट चार्ज इट एट रेस्ट बुझीपार ना। सो ये आम जो कहे कि स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इट्स ओके बट आम आगे भलसे बुझार अच्छे कि चार्ज एट रेस्ट मीनिंगटा कौन चार्ज एट रेस्ट जो अच्छी दैट इज ए रिलेटिव टर्म। फॉर एग्जांपल तुम कौन कर ट्रेन रे जाऊँ तो ट्रेन रे गले तुम मनकर ट्रेन ओबियसली बस थी है ना तो तुम सामने जड़े बस तुम देखुच सी तुमको देखुची है ना। सो तुम बोली सी रेस्ट अच्छी तापाई बोली तुम रेस्ट अच्छ बट ट्रेन मुव कर बुझीपार ना सेमती चार्ज मुव करे बट आम एज ए ऑब्जर्वर एज्यूम करवा कि चार्ज रेस्ट अच्छी माने चार्ज आम रेस्ट अच्छू आम चार्ज रेस्ट अच्छी इट मीन्स दैट।
सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीनिंग जोटा कि लिखा है देखिए कौन लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नॉट merely charge at rest. It is the study of force, field, potential which arises from the static electric charge. Statics meaning होचे rest, electro meaning होचे charge. तो आमे चार्ज को रेस्ट रखी की स्टडी करने चार्ज मूव ही थाई पारे बट रिलेटिव नो चार्ज पे आमे रेस्ट अछि एंड आम पे चार्ज रेस्ट अछि बुझी परलो तो चार्ज को रेस्ट एज्यूम करके आमे चार्ज विषय जो स्टडी करछे से ब्रांच ऑफ फिजिक्स को आमे कोन करछे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स so here we assume that the observer and the source charges are stationary relative to each other the main thing is it ki both like charge and the observer are relatively stationary. Stationary means what? Rest to each other. Okay. So electrostatics रे हमें स्टडी करियर अछि कोन कोन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रे हमको देखियर अछि बेसिकली चार्ज रो इंटरैक्शंस दैट इज फोर्स है फील्ड एंड पोटेंशियल एति जिनस इन स्टडी करियर अछि हमको ए टोटल यूनिट रे हम एति जिनस स्टडी करियर ठीक अछि फोर्स ऑफ फील्ड को हमें देखिबा फर्स्ट चैप्टर रे पोटेंशियल को देखिबा सेकंड चैप्टर ओके सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बुझिया भितरे हमें कोन करिया पड़िबो ना जानिया को पड़िबो कि ए जो चार्ज वर्ड ता कहले चार्ज वर्ड रो मीनिंग कोन चार्ज रो मीनिंग कोन सेटा को वीडियो बुझियो तो I hope कि तुम खाता खुली बसते हो so you can write it down then after we will move to the next topic pause the video and write down it okay a main thing is what कि you should take and maintain a proper note which will help you in the preparation and the revision at the last time जो तुम्हारा निजर hand written notes नहीं ताल तुमको maybe किसी असुविधार सम्मुखीन होगा को पड़ी पारे so I wish कि तुम पाखे तुम प्रॉपर नोट थिवो एंड गोटे पेन थिवो ये तो स्टाइलसटा छाड़ दियो तुम पाखे पेन थिवो हला खाता थिवो तुम आराम से लिखो फर्स्ट कथा बुझो देन लिखो हला मो सहित मुझे जो पढ़ो से टाइम पे किछ लिखा दरकार नहीं फर्स्ट बुझियो ट्राई करियो देन आफ्टर लिखो नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज रो मीनिंग के बुझो इलेक्ट्रिक चार्ज कौन लिखा है फर्स्ट देखिए दबा इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंटरी पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन व्हिच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओके सुनो 11th रे हमें मास विषय स्टार्ट करते 11th बोले नुह हमें पिला बड़ मास विषय पढुछे वस्तुत्व विषय जानछे हमें ठीक तो मास होछि गोटे ऑब्जेक्ट रो एमिति गोटे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जोटा द्वारा कि हम जानी पारछो कि से बॉडी पाखरे से ऑब्जेक्ट पाखरे केते क्वांटिटी अछि क्वांटिटी कंटेन्ड इन अ मैटर इज कॉल्ड बेसिकली द मास लाइक दैट चार्ज होछि गोटे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहारो ना बॉडी रो कोनोसी गोटे ऑब्जेक्ट रो ठीक अछि एठी हमें एलिमेंटरी पार्टिकल्स भी कहि परिया बेसिकली चार्ज ता एलिमेंटरी पार्टिकल्स पाखरे थाए ठीक अछि अच्छा एलिमेंटरी पार्टिकल्स माने कोन एलिमेंटरी पार्टिकल्स माने फॉर एग्जांपल हम पाखरे गोटे बहुत बड़ मैटर अछि आमे से मैटर को ब्रेक करबा मैटर को ब्रेक करले एट द लास्ट हम जाई कोड पहुंचबा एटम रे पहुंचले देन एटम आउट के जदी भितर जाउ कोन पड़िबा हमको इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करिया जाना पड़िबा हमको कार चारि पटे रिवॉल्व करछि ना न्यूक्लियस रो चारि पटे रिवॉल्व करछि न्यूक्लियस रो भितर कोन अछि ना प्रोटॉन अछि न्यूट्रॉन अछि तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एगुडा को सब कोन होय परिया हमें एलिमेंटरी पार्टिकल्स और फंडामेंटल पार्टिकल्स सो से फंडामेंटल पार्टिकल्स मानकर बा एलिमेंटरी पार्टिकल्स मानकर किछि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी अछि दैट्स नोन एज व्हाट चार्ज ठीक जेमिति कौन से ऑब्जेक्ट रो मास होची इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी सेमिति चार्ज होची एलिमेंटरी पार्टिकल्स रो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी अच्छा तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोल तो बुझा पड़ला बट अब टिके डीपली जाई बुझियो हमें ग्रेविटेशन चैप्टर 11th क्लास रो ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़थिले वो एठी बुझे दोचे हम पढ़थिले कि हम पाखरे जदी दुईटा ऑब्जेक्ट अछि हम पाखरे दुईटा ऑब्जेक्ट अछि जार कि मास अछि लेट्स से m ये होची m1 एंड दिस इज m2
according to Newton's law of gravitation m1 mass m2 mass উপরে কিছু ফোর্স পকেইব কো টাইপৰ ফোর্স পকেইব যেহেতু আমাৰ পাখৰে মাস আছে gravitational force পকেইব and we know that gravitational force is attractive in nature and m2 টা কোন হ'ব m1 আড়কু attract হ'ব ঠিক সেমিতি m2 কোন করিব m1 উপরে ফোর্স পকেইব जोटा कि attract হ'ব কা আড়কু m2 আড়কু তো মই এমতি মার্ক কৰি পাৰিবি कि m1 attract হ'ব m1 attract হ'ব m2 আড়কু and m2 attract হ'ব m1 আড়কু तो से जो attractive force पडुची से attractive force होची कोन कहलो that is gravitational force and according to Newton's gravitational force that is attractive in nature और तार गोटे फॉर्मुलेशन थिला that is gm1 m2 divided by r square r होची कोन छुआ r होची separation between two mass bodies अच्छा तो एटा थिला कोन हमरो gravitational force which is attractive in nature ओके एबे हम जस्ट देखिले कि चार्ज होची इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहार इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ना एलिमेंटरी पार्टिकल्स तो मु एलिमेंटरी पार्टिकल्स अगर कहा कहली ना जो प्रोटॉन अछंदी इलेक्ट्रॉन अछंदी दे आर एलिमेंटरी पार्टिकल्स अच्छा एलिमेंटरी पार्टिकल्स रो भी तो मास अछि आर मीनिंग एटी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी ओबे होबो बिकॉज़ वी हैव स्टडीड दैट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज एन यूनिवर्सल लॉ सबु जगह रे एप्लीकेबल होबो तो नेकी देखिबा टिके जदि मु कोन करबी एठी मास m1 जगह रे आ मास m2 मु आउथरे टिके ड्रा कर दउ सेटा को okay this is mass of proton and आ गोटे mass नहीं होछि मु ये भी सेमती गोटे mass of proton माने दीटा proton basically नेली मु हला जार भी किछि mass अछि हला proton रो mass अछि electron रो mass अछि they are having some mass okay हमें कोई माने जको massless particles mass अछि ठीक तो जदि मु दीटा प्रोटॉन से मानक भीतर भी कोन होबा कथा अट्रैक्शन होबा कथा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बट अट्रैक्शन होबो नाही ए मानक भीतर कोन होबो कहलो रिपल्सन होबो कोन होबो रिपल्सन होबो तो जो रिपल्सन हला ठीक अछि अट्रैक्शन हला नहीं इट्स ओके रिपल्सन हला तो जेति के अमाउंट ऑफ फोर्स दे के अट्रैक्शन होबा कथा कोन सेति के अमाउंट ऑफ फोर्स रो रिपल्सन होबो ना सेति के अमाउंट रो फोर्स रो रिपल्सन होबो नाही एठी जो अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ द रिपल्सन होची सेटा पूरा पूरी अलग रहबो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू माने एठी हमें प्रोटॉन नेथिले न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हिसाब रे एठी अट्रैक्शन हेतंदा काहे ना एमान ऑफ मास अछि बट एमान को भितरे अट्रैक्शन होउनी कोन होची ना रिपल्सन होची रिपल्सन भी जो होची जो फोर्स देकी रिपल्सन होची से फोर्स ता ग्रेविटेशनल फोर्स रो अमाउंट से तो समान होउनी हेले आपण सर जानले केमती ग्रेविटेशनल फोर्स केते हे पारे सो देखो मते मास ऑफ प्रोटॉन जणा अछि जदि म मानकर गोटे रेडियो माने सेपरेशन नै जिबी हला किछि गोटे सेपरेशन नै जिबी तो सेपरेशन भी जणा पड़ जिवो मते माने जणा थिबो मते जीरो वैल्यू भी जणा अछि तो सब डाउन नै पुट कर देबी बाहर पड़ जिवो ठीक तो एमान को भितरे मु ग्रेविटेशनल फोर्स बाहर करि परबी बट से ग्रेविटेशनल फोर्स जति की अमाउंट रो पडिवा कथा सेति के अमाउंट रो रिपल्सिव फोर्स एबे हमें जो देखुछ सेटा पडुनी ठीक अच्छा तो एठी माइंड रे क्वेश्चन आसीबा कथा कि मास थांता तो ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ता बट एठी मास थाई की भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं माने किछि अलगा जिंस अछि से अलगा जिंस होछि कोन जानछो चार्ज जेहेतु प्रोटॉन पाखरे चार्ज अछि हला तो सेमानक भीतर गोटे अलगा टाइप ऑफ फोर्स बने आ से फोर्स को हमें कोन कहउछे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स gravitational force कौन थिला ना attractive in nature थिला always attractive in nature which having means you can say there is two bodies or multiple bodies which having masses they should contain some gravitational force they can apply a gravitational force okay but एबे हमें देखिले कि जदि कोनोसी एलिमेंटरी पार्टिकल पाखरे चार्ज अछि समानको ऊपरे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होछि आ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना टू टाइप्स हो हे पर गोटे होछि अट्रैक्शन
बा अट्रैक्टिव इन नेचर आउ गोटे रिपल्सन और रिपल्सिव इन नेचर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स पड़वा नहीं पड़ो ग्रेविटेशनल फोर्स भी पड़ुची बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंपैरिजन रे ग्रेविटेशनल फोर्स रो जो क्वांटिटी होची सेटा बहुत ही लेस है होची एंड वी नो द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स सेथि पय बोली आमे सेटा को नेग्लिजिबल मानिबा कंसीडर करबानी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को देखियो। तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ प्रोटॉन भितर कोन देखिया मिलला हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो टिके टिके धारणा बनला इलेक्ट्रिक फोर्स कौन एंड एलिमेंटरी पार्टिकल्स कौन बेसिकली चार्ज कौन चार्ज होची एमिति गोटे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंटरी पार्टिकल जहाँ द्वारा कि आम कौन कर परिया इलेक्ट्रिक फोर्स को स्टडी कर परिया। सो इलेक्ट्रिक चार्ज को आम सिंबलाइज करछे कैपिटल क्यू किंबा स्मॉल क्यू द्वारा हला आउथरे एटा गोटे पढ़ दोछि इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंटरी पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इट्स सिंबल इज कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। आउ आर यूनिट जो अछि ए यूनिट को आमे नै जेबा कूलम बोली हला ठीक अछि। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज होची कूलम। सीजीएस यूनिट भी थिबो हाँ सीजीएस यूनिट भी अच्छी सीजीएस यूनिट हे जिवो स्टैट कूलम। आउ कूलम माने 1 कूलम आउ 1 स्टैट कूलम भितर किछि रिलेशन अछि दैट इज व्हाट 1 कूलम इज इक्वल्स टू 3 into 10 to the power 9 स्टैट कूलम। आउरी गोटे यूनिट अच्छी जोटा को आम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बोली कहचे मीन्स सीजीएस सिस्टम टा जदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे थिबो ठीक अछि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीजीएस सिस्टम बेसिकली इलेक्ट्रो मैग्नेटिक सीजीएस सिस्टम रे चार्ज रो सीजीएस यूनिट को कौन कहबा हमें अब कूलम बोली कहबा कौन कहबा ऑफ कूलम बोली कहबा आउ 1 कूलम आउ ऑफ कूलम भितर रिलेशन होची 1/10 ऑफ कूलम। ओके सो 1 कूलम इज 1 coulomb is a charge flowing through a wire in 1 second if the current is 1 ampere। आमे करंट विषय भी पढ़ी छे कि I is equals to I करंट थिला ना 10th क्लास रे देखले हमें सो I is equals to what charge flowing per unit time। करंट विषय में आगे जाके और बहुत भल से पढ़िया मु जस्ट खाली डेफिनेशन कोर्स जोटा कि हमें 10th रे देखिथिले कि कोनोसी गोटे सरफेस एरिया देकी केतिके अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रैवल करछि केतिके अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करछि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स राइज टू करंट। तो से हिसाब रे हमें 1 कूलम चार्ज को केमि लिखि परिबा q इज इक्वल्स टू it लिखि परिबा I फॉर I माने होछि एठी करंट आउ t माने होछि टाइम ठीक अच्छे। करंट को हमें एम्पियर द्वारा लिखुचे दैट इज एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर एंड एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। तो q इज इक्वल्स टू it बनी पारिबो जदि मु 1 कूलम को लिखिया को चाहिबो ताले 1 कूलम को लिखि परिबी कोन 1 एम्पियर करंट फ्लो होतबो इन 1 सेकंड देन इट गिव्स राइज टू 1 कूलम ऑफ चार्ज। माने हम एमति कहि परिबा कि गोटे कूलम चार्ज फ्लो सेतबे करियो जदि कि 1 एम्पियर रो करंट बनिबो इन 1 सेकंड ठीक। नाउ कम्स टू द डायमेंशन हमें ए फॉर्मूला रे बाहर करि परिबा ठीक अछि। ए फॉर्मूला रे देखि परिबा हमें I इज इक्वल्स टू q बाय t थिला तो q इज इक्वल्स टू it बनिबो I पय हम एम्पियर लिखुचे माने a लिखुचे न डायमेंशनल फॉर्मूला एंड टाइम पय t लिखुचे तो ये बनि जिवो at हला आपको जदि आरे भल से लिखियो बोली कहले ये बनिबो m0 l0 a1 t1 किछि नै माने कोन 1 अछि
तो आउ जिन मन रखा कि आमर जो चार्ज अच्छी चार्ज इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी चार्ज हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन इट्स ऐड आल्जेब्रिकली है माने आपको आम आल्जेब्रिकली ऐड कर इट एड्स आल्जेब्रिकली जेहेतु यहाँ गोटे स्केलर फिजिकल क्वांटिटी ओके सो आप जिन मुझे लिखुची ये लाइक आम एलिमेंट्री पार्टिकल्स हिसाब से कौन कौन देखले प्रोटॉन देखले और इलेक्ट्रॉन देखले तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स जहाँ फंडामेंटल पार्टिकल्स था एलिमेंट्री पार्टिकल्स हिसाब से आम देखले प्रोटॉन आ गोटे हूँ इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन पाखे पॉजिटिव चार्ज थाए एंड इलेक्ट्रॉन पाखे नेगेटिव चार्ज थाए केतिकी अमाउंट चार्ज रही पारे ना प्रोटॉन पाखे रही पारे प्लस 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन पाखे रही पारे नेगेटिव ऑफ 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम ऑफ चार्ज माने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रे अमाउंट ऑफ चार्ज कौन अच्छी इक्वल अच्छी ये जो दुईटा लिखले ना ये हूँ कौन कहल अमाउंट ऑफ चार्ज amount of positive charge and this is amount of negative charge okay amount of positive charge and amount of negative charge एठी आमे चार्ज रो आ गोटे प्रॉपर्टी भी लिखि परिबा that is similar charges repel each other and dissimilar charges attracts each other आई होप हमको बहुत बहुत देखा है जदि आम पाखे जगह नहीं पेपर सेट रखीदेवी मुझे देखी दूसरे कौ लाइन जे जो लास्ट लाइन लिखले आम है जदि आम पाखे गोटे पॉजिटिव चार्ज अच्छी तुम तापर ही को ड्र करके लिखिदेव है जदि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होते से भितर कौन हम कह रिपल्सन हम नेगेटिव चार्ज अच्छी नेगेटिव चार्ज अच्छी से भितर कौन हम रिपल्सन हम कौन पाई ना एगुड़ाक होती सिमिलर चार्जेस कौन सिमिलर चार्जेस ठीक अच्छे वेट सिमिलर चार्जेस मान भितर कौन हम ना अट्रैक्शन हम एंड डिसिमिलर चार्जेस जदि अच्छा से कौन हम ना रिपल्सन हम टिके यहाँ कुछ सान करदेगा जरा कौन सुविधा हम लिखे बाकी जिनसा हाँ जदि पॉजिटिव और नेगेटिव अच्छा से भितर कौन हम अट्रैक्शन हम कौन पाए ना यहाँ हूँ तुम डिसिमिलर चार्जेस ठीक अच्छे बुझीपारे एंड आम जापर कि इलेक्ट्रिक चार्ज भितर गोटे टाइप ऑफ फोर्स पड़े दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स विषय में आम आगे पढ़ा आज आम बेसिकली पढ़ार अच्छे आ बुझार अच्छे कि चार्ज कौन और तार प्रॉपर्टीज कौन कौन अच्छे तो चार्ज विषय में आम ये ज्ञान नहीं गले आगुड़ा सब तुम कौन कर ना तुम खातार लिखिद ठीक अच्छे जी आगे Now the next topic is charging a body. तो आम फर्स्ट बुझा कि चार्जिंग माने कौन कौन से बॉडी को आम केमी चार्ज कर फर्स्ट आम जानार अच्छे कि बॉडी जो अच्छे से केते टाइप थाई पारे अकॉर्डिंग टू माने ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज है ना तो गोटे बॉडी थाई पारे पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी ठीक अच्छे
गोटे थाई पारे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी आ गोटे थाई पारे नेगेटिवली चार्ज बॉडी आ गोटे थाई पारे न्यूट्रल बॉडी तो आम टे बुझा एगुड़ाकर मीनिंग कौन तापरे मु आसबि चार्जिंग बॉडी को ठीक अच्छे टे पाखु पाखु आन दूसरी सो दैट मत बाकी जिन गुड़ा लिखार सुविधा हम ए गोटे बॉडी आम नहीं लेट्स से दिस इज ए बॉडी ओके सो फर्स्ट बॉडी पाखरे लेट्स से 1 2 3 4 5 पॉजिटिव चार्ज अच्छी एंड 5 नेगेटिव चार्ज अच्छी कौन देखिपारे आम ये पॉजिटिव चार्ज अच्छी 5टा एंड नेगेटिव चार्ज अच्छी 5टा हाँ कि ना तो जेहेतु आ पाखे पॉजिटिव चार्ज जी अच्छी नेगेटिव चार्ज से अच्छी नेट चार्ज के बनव एवं जस्ट देखिए आसले कि आम चार्ज को एड करमी एड करवा आल्जेब्रिकली एड कर कौन पाई ना यहाँ हूँ गोटे स्केलर फिजिकल क्वांटिटी तो +5 -5 दैट गिव्स राइज टू 0 दैट मीन्स नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द बॉडी इज 0 तो न्यूट्रल बॉडी केस रे कौन हुए ना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज equals to number of negative charge हम को केस रे न्यूट्रल बॉडी केस रे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी केस रे कौन हम तो माइंड रे आसतो कि सर टोटल बॉडीटा पॉजिटिवली चार्ज पॉजिटिव चार्ज थी ना पॉजिटिवली चार्ज बॉडी पाखे पॉजिटिव चार्ज भी थी नेगेटिव चार्ज भी थी हेले सर पॉजिटिव चार्ज अमाउंट अधिक थी ठीक टिके शुण आम यहाँ को केमी डिफाइन करवा अलग वे करवा बट आम कहीपर कि हाँ नंबर ऑफ चार्ज माने पॉजिटिव चार्ज अधिक अच्छे नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कम अच्छे टिके शुण लेट्स से आ पाखे 1 2 3 4 एंड 5 पॉजिटिव चार्ज अच्छी 1 2 3 4 नेगेटिव चार्ज अच्छी तो ये पॉजिटिव चार्ज अच्छी 5 नेगेटिव चार्ज अच्छी 4 हाँ कि ना माने ये नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज अधिक अच्छी नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कम अच्छी बट आपको आम डिफाइन केमती कर जाना गोटे बॉडी को आम से पॉजिटिवली चार्ज करवा जिते कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कम अच्छी हाँ ना नेगेटिव चार्ज कम अच्छे यार मीनिंग कौन से बॉडी रे डेफिशिएंसी अच्छी कहाँ डेफिशिएंसी अच्छी इलेक्ट्रॉन सो वी विल टेल दैट अ बॉडी इज सेड टू बी पॉजिटिव व्हेनेवर दैट बॉडी हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेमती कहबनी कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज अधिक अच्छे सर ना वी विल काउंट नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कौन पाई से जस्ट टिके आगू देखा आम ठीक ए मन रखार अच्छे कि नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज को काउंट करार अच्छी फॉर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और नेगेटिवली चार्ज बॉडी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज को काउंट करार नहीं है तो आम डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई कौन लिखा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लिखा है आदि नेगेटिवली चार्ज बॉडी आसो देख कौन करार आमको लेट से हम पाखे 5टा पॉजिटिव चार्ज अच्छी 1 2 3 4 5 6 है तो ये आम देखिपारे कौन पॉजिटिव चार्ज अच्छी 5टा बट नेगेटिव चार्ज अच्छी 6टा तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज लेस अच्छी नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज टू तो ये आमर कौन हो एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो कौन हो एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जदि एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होची ताले हम से बॉडी को कौन कहवा नेगेटिवली चार्ज बॉडी द बॉडी इज सेड टू बी नेगेटिवली चार्ज व्हेनेवर इट हैविंग एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ओके सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमें काउंट कहीं काउंट करवा सुनो
आम आग को गोटे नुआ टॉपिक देखा दैट इज मेथड ऑफ चार्जिंग है ठीक अच्छे। तो आम से टाइम जाना कि केमी बॉडी को चार्ज करा जाए। मुख्य जिन हूँ कौन जो बॉडी को चार्ज करे को चार्जटा बेसिकली ट्रांसफर हो चार्जिंग ए बॉडी माने कौन जानते ना चार्जिंग ए बॉडी माने हूँ नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को आम चार्जिंग बॉडी बोली कहे ठीक अच्छे। अच्छा ये गोटे टर्म विषय में डिस्कस करें दैट इज वर्क फंक्शन को तुम बहुत भलसे बुझ कौ चैप्टर कल मैंने आम जो डुएल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर चैप्टर से वर्क फंक्शन भलसे बुझ ये वर्क फंक्शन को मुझे तुमको ब्रीफली बुझे दूसरी शुण मुझे तुमको जस्ट कौन कहली कि चार्जिंग ए बॉडी माने कौन कि गोटे बॉडी रू आउ गोटे बॉडी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कौन एमती खाली हो नाई किसी गोटे प्रोसेस होगा पड़ो माने कहया गले आमको किसी सफिशिएंट एनर्जी दबा पड़ो किसी वर्क डन करा पड़ो सो दैट गोटे बॉडी रू इलेक्ट्रॉन बाहर के आउ गोटे बॉडी को जापर। तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन हमको करार अच्छी कौन पे ना इलेक्ट्रॉन को गोटे बॉडी आउ गोटे बॉडी को नापी से अमाउंट ऑफ वर्क डन को आम कौन कह वर्क फंक्शन बोली कह। तो जदि वर्क फंक्शन अधिक अच्छी ताहले हमको बेसी वर्क डन करा पड़ो जदि वर्क फंक्शन कम अच्छे ताहले हमको लेस वर्क डन करा ठीक अच्छे। तो चार्जिंग ए बॉडी माने कौन बुझिपारे आम दैट इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए बॉडी है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करा तो बॉडी रे जो इलेक्ट्रॉन थी से इलेक्ट्रॉनटा बाहर को आसापी किसी एनर्जी दरकार कर से एनर्जी को आम वर्क फंक्शन बोली कहे ठीक अच्छे। तो से सफिशिएंट एनर्जी जो से बॉडी को दे पारे ताल कौन हम इलेक्ट्रॉनटा ट्रांसफर हम गोटे बॉडी आउ गोटे बॉडी ठीक। तो ये राइट डाउन कर दियो देन आम जा Now come to the next topic that is charging by friction ठीक है रुह इठी आम टे पढ़ा कि मेथड्स कौन कौन अच्छी केमती बॉडी को चार्ज कर जाने मैंने जानीपारे कि चार्ज बॉडी कौन कौन बनी पारे सेकेंडली जानीपारे कि चार्जिंग ए बॉडी माने कौन है एंड एबे आम देखा मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो मु एक्स्ट्रा ये गोटे पेज नहीं जी तो बेटर रही जस्ट wait give him to sec okay एबे आमे देखिबा मेथड ऑफ चार्जिंग ए बॉडी सो कौन सी बॉडी को चार्ज करने आम पाखे दि तीन मेथड अच्छी से विषय टी डिस्कस करवा। फर्स्ट हूँ चार्जिंग ए बॉडी बाय फ्रिक्शन फ्रिक्शन माने जानो चलो आमको कौन करार दीटा बॉडी नबार अच्छे दीटा बॉडी को कौन करार रब करार तो रब कले कौन हम ना चार्ज ट्रांसफर हम एमती केमती है देखा आगु आउ गोटे मेथड हूँ चार्जिंग ए बॉडी बाय कंडक्शन चार्जिंग ए बॉडी बाय कंडक्शन कंडक्शन माने कौन कांटेक्ट जदि आम दीटा बॉडी को कांटेक्ट को आनिबा ताहाले जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो से प्रोसेस को आम कौन कहबा कंडक्शन बोली कहबा। सेमिति आ गोटे प्रोसेस होची चार्जिंग ए बॉडी बाय इंडक्शन इंडक्शन रे कौन हम विदाउट एनी कंटैक्ट आम कौन करिया पड़ो विदाउट एनी कंटैक्ट आमको
बॉडी को चार्ज करिया पड़ो फ्रिक्शन रे हमें कौन करिया अछि दीटा बॉडी को रब करिया अछि रबिंग बिटवीन two bodies है ना write down then after we move to the next topic now come to charging by friction that is also known as a triboelectricity. This is all about when two distinct insulators are rubbed together, the friction increases the contact area and provide energy. बहुत सारी बुझिबा फिगर ड्रॉ करिकी तो मु फर्स्ट रे दीटा बॉडी नहीं आउची ये होची गोटे बॉडी सेमिति आउ गोटे बॉडी एटू कॉपी कर दवा देन ए दीटा को फेर गोटे कॉपी कर दवा तो मो पाखे गोटे बॉडी हूँ ए आ गोटे हूँ बी ठीक अच्छे बिफोर चार्जिंग बिफोर फ्रिक्शन बिफोर चार्जिंग ही लिखी दूँ बिफोर चार्जिंग ए जो थिला ए थिला इन्सुलेटर कहार ना न्यूट्रल बॉडी थिला बेसिकली हला ए गोटे न्यूट्रल बॉडी थिला एंड बी भी न्यूट्रल थिला फॉर एग्जांपल ए पाखरे पांचटा पॉजिटिव चार्ज थिला आउ पांचटा नेगेटिव चार्ज थिला बी पाखरे लेट्स से 6टा पॉजिटिव चार्ज थिला एंड 6टा नेगेटिव चार्ज थिला 6टा पॉजिटिव चार्ज और 6टा नेगेटिव चार्ज थिला बी पाखरे एंड 5टा पॉजिटिव चार्ज 5टा नेगेटिव चार्ज थिला ए पाखरे तो से न्यूट्रल कहवा कौन पाई ना इंडिविजुअली देखा जदि ए पाखरे कौन अच्छे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज अच्छी बी पाखरे भी सेमती नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज अच्छी ओके दीटा बॉडी कौन अच्छे बर्तमान न्यूट्रल अच्छे कौन अच्छे न्यूट्रल अच्छे ओके तो आम कौन करिया बर्तमान दीटा जाक बॉडी को लेकिन रब कराइबा हला तो एठी आम कौन करछे दीटा बॉडी को रब करछे लिखि दोछे रबिंग टू बॉडीज तो जो आम रब करवा कौन हम गोटे बॉडी सरफेस आउ गोटे बॉडी सरफेस उपर कौन हम घसी हम घसी हेले को टाइप एनर्जी बन कहल हीट एनर्जी बन तो से हीट एनर्जी जब सफिशिएंट होची कौन सी गोटे बॉडी को इलेक्ट्रॉन को बाहर करने इलेक्ट्रॉन बाहर जीव गोटे बॉडी आ गोटे बॉडी को ट्रांसफर हो तो सपोज ए बॉडी आम पॉजिटिव चार्ज लगे 5टा ठीक नेगेटिव चार्ज थिला 5टा लेट से सपोज ए बॉडी रू गोटे इलेक्ट्रॉन टा बी बॉडी को पड़ेगा है तो बी बॉडी पाखे पॉजिटिव चार्ज थिला केतरा 6टा बोधे 6टा थिला है एंड नेगेटिव चार्ज केतरा थिला 6टा थिला बट एबे ही जो केतरा 7टा ओके ओके नेगेटिव चार्ज अच्छी 1 2 3 4 5 6 है मु कौन कहूँ ना गोटे इलेक्ट्रॉन ए बॉडी रू बी बॉडी को गला है तो आफ्टर चार्जिंग कौन हम देखो बेसिकली रब करे कि मु कौन करली बॉडी को चार्ज करली तो चार्जिंग पर कौन हम
ए बॉडी पाखे पांचटा जमी पॉजिटिव चार्ज था सेमती रहिबो 1 2 3 4 5 है नेगेटिव चार्ज पांचटा थिला बट गोटे नेगेटिव चार्ज कौन कहली बी को पड़ेगला तो ये केतरा रहिबो 1 2 3 4 एंड बी पाखे छटा पॉजिटिव चार्ज थिला से जेम सेम थाउ ठीक नेगेटिव चार्ज भी छटा थिला बट एबे केतरा हिजो सातरा हिजो काइना ए बॉडी रो बी बॉडी को आसला 1 2 3 4 5 6 7 तो ठीक देखो ए बॉडी पाखे कौन है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो ताले ए बॉडी कौन गला पॉजिटिवली चार्ज बॉडी गला पॉजिटिवली चार्ज बॉडी गला बीटा जो अच्छी दैट हैविंग एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन माने ये कौन है नेगेटिवली चार्ज बॉडी है ठीक बुझी पार्छ हमें तो फ्रिक्शन करिक ना हमें कौन कर पार्छ एमती बॉडी को चार्ज करे पार्छ ठीक तो राइट इट डाउन देन आफ्टर वी विल मूव टू द नेक्स्ट सो आमर नेक्स्ट मेथड होची चार्जिंग बाय कंडक्शन और कांटेक्ट where direct physical contact between a charged conductor and an uncharged conductor फ्रिक्शन केस रे हम कोन करले दीटा इन्सुलेटर बॉडी देखले दीटा जाको इन्सुलेटर बॉडी कोन थिला ना न्यूट्रल थिला एबे हमें गोटे चार्ज्ड कंडक्टर नबा गोटे अनचार्ज्ड कंडक्टर नबा हला आ से दीटा बॉडी को कोनोसी गोटे माने वायर हो कि कोनोसी गोटे कंडक्टर द्वारा कोन करियो कांटेक्ट करने तो मु फिगर टिके ड्रा कर दोछि देन आफ्टर वी विल अंडरस्टैंड ये होची गोटे बॉडी ये होची आ गोटे बॉडी मार ही रेप्लिका बने दूसरी सो दैट सुविधा हो हमको तो ये दीटा बिफोर चार्जिंग किसी ए टाइप थिला हला तापरे मु इतरा बॉडी को चार्ज करेबी देन तापरे रिजल्ट कोन होबो सेटा को देखिबा एपर साइड ओके फिजिकल कांटेक्ट भी आनी परिबा किछ प्रॉब्लम नै तो मोडा गोटे पाखु नै होछि एटा बिफोर चार्जिंग केस एटा चार्जिंग बेले माने एटी कोन करले हमें कांटेक्ट को आनले two bodies come in contact and after charging कौन होगा देखियो तो मु गोटे बॉडी नहीं ए आ गोटे बॉडी होची तो आमे कंडक्शन पाई बोली कौन करिया पड़िबो ना गोटे चार्ज बॉडी नबार अच्छे गोटे अनचार्ज बॉडी नबार अच्छे अनचार्ज मीन्स न्यूट्रल बॉडी नबार अच्छे तो मुझे गोटे न्यूट्रल बॉडी ड्रॉ कर दूची ए रे हैला लेट्स से ए रे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज अच्छी 1 2 3 4 5 6 हैला एंड नेगेटिव चार्ज अच्छी 1 2 3 4 5 6 तो ये कौन है बर्तमान गोटे न्यूट्रल बॉडी है न्यूट्रल है बीटा को मु चार्ज्ड बॉडी नहीं होची लेट सपोज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दबा तो बी बॉडीटा कोन हे जो नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी जो हां कि ना पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कोन पे ना डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन अछि ठीक अच्छा तो मु एठी रखुची 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड 1 2 3 4 नंबर ऑफ लेट से नेगेटिव चार्जेस तो बॉडीटा कोन हेगला कहलो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी हेगला मु प्लस VELY लिखुची आरो मीनिंग होची पॉजिटिवली तो मैं पूरा लाइन लिखना पूरा वर्ड लिखो पॉजिटिवली लिखना पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है
एबे ए बॉडी और बी बॉडी को कौन करार पाखु पाखु रखार अच्छे तो पाखु पाखु रखले कौन हम एट्राक्शन रिपल्सन हम अच्छा माने जोटा कि डिसिमिलार चार्जेस थे से एट्राक्ट करेंगे आउ सिमिलार चार्जेस जो गुड़ा थो से गुड़ा सब कौन करेंगे रिपेल करेंगे तो देखिए टी कौन हो ए बॉडी पाखे अच्छी 6टा चार्ज पॉजिटिव वाला ठीक एंड बी बॉडी पाखे भी थिला 6टा चार्ज पॉजिटिव वाला टिके रो ड्रॉ करा कौन दरकार कटिगला इस वेट गिव मी 2 सेक इस कटना 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 हो मैं तो ड्रॉ कर देवी ना ड्रॉ करा कौन अच्छे ओके सी 6टा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थिला नेगेटिव चार्ज बॉडी केतरा अछि 1 2 3 4 5 6 आ एपट साइड रे पॉजिटिव चार्ज बॉडी थिला 6टा माने पॉजिटिव चार्ज थिला 6टा 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव चार्ज लगा 1 2 3 4 4टा थिला नेगेटिव चार्ज आउ 6टा थिला पॉजिटिव चार्ज जेतो हम कांटेक्ट को आनले दीटा बॉडी को से टाइम रे आम देखी पारे इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन कौटी अधिक अच्छी एटी अधिक अच्छी बी टे कम अच्छी तो इलेक्ट्रॉनटा ए टू बी को ट्रांसफर हो ना बी टू ए को ट्रांसफर हो ऑब्वियसली ए टू बी को ट्रांसफर हो लेट से गोटे इलेक्ट्रॉन कौन है ए टू बी को ट्रांसफर होगा है तो आफ्टर चार्जिंग कौन हम देखा टे ए बॉडीटारे पॉजिटिव चार्ज के 6टा रही 1 2 3 4 5 6 है एंड नेगेटिव चार्ज के 1 2 3 4 5 6टा थिला गोटे इलेक्ट्रॉन साइड पड़गला तो ये गला 5टा इलेक्ट्रॉन एपट साइड रे बी बॉडी पाखे पॉजिटिव चार्ज रिमेन सेम 1 2 3 4 5 6 एपट साइड हो केतला थिला 4टा थिला ना 1 2 3 4 है आ गोटे पड़ा आसीगला तो ये गला 5 तो एबे देखिबार अछि हमकु ए बॉडीटा कौन है ना ए बॉडी सर हमको देखिया मिलछि 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव चार्ज अच्छे माने पॉजिटिव चार्ज अच्छे 6टा एंड 1 2 3 4 5 नेगेटिव चार्ज अच्छे 5टा तो एटा कौन है बर्तमान पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है एबे बीटा देखिबा टिके बी रे पॉजिटिव चार्ज केतना अछि 1 2 3 4 5 6 6टा पॉजिटिव चार्ज अच्छे नेगेटिव चार्ज केतना अछि 1 2 3 4 5 है तो यहाँ भी कौन है हमरो पॉजिटिवली चार्ज ठीक अच्छे तो आम कौन देखा पाइले आम गोटे न्यूट्रल बॉडी नहीं गोटे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी नहीं न्यूट्रल बॉडी जो थिला से न्यूट्रल बॉडीटा आफ्टर कंडक्शन माने जो कंटाक्ट को आणले आम चार्ज बॉडी सहित है आफ्टर कंडक्शन कौन होगा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगा तो गोटे भल जिन हूँ कौन जो कंडक्शन कराने कौन हम जो टाइप रो चार्ज बॉडी नहीं न्यूट्रल बॉडीटा से टाइप रो चार्ज हो नेगेटिव नहीं देखिए टी चलो एटा नेगेटिव देखा एटा फर्स्ट राइट डाउन कर दियो देन आफ्टर हम नेगेटिव ना मुझे ओवरअली कहदेवी छोट करके ये देखो यहाँ जो गोटे पॉजिटिव चार्ज अच्छे आ गोटे पेज में अटैच कर दूचे सुविधा हो देखो जब मु नेगेटिवली चार्ज बोर्ड ने भी लेट मी ड्रॉ two spheres, one is here and let copy it down। मन करो
आ पाखे पॉजिटिव चार्ज अच्छी 1 2 3 4 5 6 है एंड नेगेटिव चार्ज अच्छे अगेन 6 1 2 3 4 5 6 एटा को नहीं जावा हमें बॉडी ए है लास्ट टाइम हमें कौन करथिले ना पॉजिटिवली चार्ज बॉडी नहीं देखो टिके पॉजिटिवली चार्ज बॉडी नहीं माने एडी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज अधिक थिला नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कम थिला एबे हमें कौन करबा नेगेटिवली चार्ज बॉडी नवा माने एठी एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन थिबो हला लेट्स से 3 4 5 6 7 हला 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अछि एंड 1 2 3 4 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अछि माने पॉजिटिव चार्ज अछि तो एठी हम कोन गेले नेगेटिव चार्ज बॉडी नेले आ एटा थिला कोन न्यूट्रल एबे हम कोन करबा एदिरा को कांटेक्ट को आनिबा एबे इधर कौन करिया कांटेक्ट को आनिबा जदि कांटेक्ट को आणु से ताहले पाखु आनिया पड़ियो कांटेक्ट डिरेक्शन जदि हम कांटेक्ट को आनिबा ताहले कोन होबो देखो टिके बोलछे हम जानि पाउछे कि बी रे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोन अछि अधिक अछि तो कंसंट्रेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार अधिक अछि बी रे अधिक अछि ए टू कम अछि तो माने ए रे कम अछि तो बी टू ए को जीवो इलेक्ट्रॉन्स लेट से कि गोटे इलेक्ट्रॉन कोन करला ए टू बी टू ए को पळासला ठीक अछि तो एबे हमें देखिबा का बकरे केते कोन चार्ज रहउछ और के को टाइप रो बॉडी बनउछ तो देखिबा ठीक है मु कौन कहली ना बी रु गोटे इलेक्ट्रॉन पड़े गला तो बी रु गोटे इलेक्ट्रॉन को हमें नेग्लिजिबल मान माने काट देबा कोन फिगरटा कटि गला टिके रुको एठू काट दउछ नले एटा काट दउछ ओके 1 2 3 4 5 6 7 7 डा इलेक्ट्रॉन रहला तो ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी ही रहला एंड एबे हमें एटा को देखिबा जरा कि न्यूट्रल थिला कोन हे जिवो गोटे इलेक्ट्रॉन पळा आसी गला गोटे इलेक्ट्रॉन एडी मार्क कर दोछि तो रह गला 1 2 3 4 5 6 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थिला 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हे गला माने एडी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉडी गला एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हे गला तो ये कोन कहबा हमें नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी बोली कहबा बुझि पाले ती जिंस तो कौन देखिया मिलला जो टाइप रो चार्ज बॉडी हमें नहीं था उसे से टाइप रो चार्ज बॉडी ए न्यूट्रल बॉडीटा ही जाउ अछि ठीक अछि त हमें लिखि परिबा in case of conduction neutral body acquires the same charge of the charged body we have taken for conduction. ठीक है वो ओके किसी डाउट्स जदि किसी अच्छी ताले कमेंट रे मत जणाओ डाउट्स हो कि कौन सी प्रॉब्लम्स हो वीडियोस को नहीं किसी फीडबैक दबार अच्छी कहीं ना ऑफलाइन रे मु पढ़े बट ऑनलाइन रे पढ़वा एटा मोर फर्स्ट है तो तमने जदि टिके एनकरेज करेबो ताले सपोर्ट देखेबो ताले मु सीरीज को पूरा बहुत भल से बनैबी एंड सेटा तुमरो प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्प करिवो हला एंड जदि ये सीरीजटा सक्सेसफुल हैला ताले बोर्ड एग्जामिनेशन पूर्व वो रिवीजन भी करेबी मन हैला माने प्रॉपर्ली गोटे चैप्टर को आमे बसिकी वन शॉट रिवाइज करवा बट मोर विश्वास कौन कि जब गोटे छुआ स्टडी कर बहुत से चैप्टर को से वन शॉट देखा ठीक बट जब कि छुआटा स्टडी करनी चैप्टर को बहुत से डीपली
ताले से वन शॉट देखले मे बी एग्जाम रे भलो मार्क आसी पारे बट प्लस टू इज नॉट द एंड ना सो हमको प्लस टू पर भावियार अच्छे से प्लस टू जी सिलेबस अच्छी जो भल से पढ़ार अच्छे आम वन शॉट उपर कहीं डिपेंड करवा गोटे दिन में आम पूरा मसकर मैंने 20टा लेक्चर कि 22टा लेक्चर पाठ पढ़ाटा संभव नो डाउट मुझे पढ़ेदेवी तुमको एंड तुम एग्जाम भी भल मार्क पढ़ा आसो बट सेटा से रिग्रस हो पार कि जोटा कि आम एवं 20टा कि 22टा लेक्चर नहीं बुझा गोटे चैप्टर को तो से फॉलो कर पूरा पूरी फर्स्ट टू नहीं लास्ट जाए स्टडी बहुत ही भलसे कर रिविजन आम बहुत कम टाइम रे कम ड्यूरेशन रे मल्टीपल टाइम्स करवा तो सेटापाई बोली फर्स्ट ये सीरीज सक्सेसफुल हवा दरकार है आउ चाहूँगी कि सब स्टूडेंट्स मान पाखे वीडियो पहुँचू आ समस्ते हेल्पफुल हूँ ता सहित जदि किसी भी एक्स्ट्रा ऐड करार अच्छी वीडियोज रे जोटा कि तुमको दरकार अच्छी लगुच तुम प्रिपरेशन दरकार बोली मत तुम फीडबैक हिसाब से कमेंट जनाओ देन आफ्टर आम सेटा को वीडियोज रे ऐड करने चेष्टा करें ओके तो बुझीपारे आम कंडक्शन एवं आम बुझा चार्जिंग बाय इंडक्शन कंडक्शन कौन थी ना कंडक्शन थी कंटाक्ट रे आम कौन कर कंटाक्ट करोचे तो सेठी जो हूँ कौन बॉडी चार्ज होती है आम कौन कहले कंडक्शन बोली एवं कौन करवा इंडक्शन देखा इंडक्शन मु कौन कर सेम एटा को कॉपी कर दूसरी तो आमको सुविधा हो ना जल्दी हो ना नाइन मार करवा कहीं खेल लगे तो चार्जिंग बाय इंडक्शन रे आम इंडक्शन रे कौन कहते कि कंटाक्ट हेनी है विदाउट कंटाक्ट आमको गोटे बॉडी को चार्ज कराया दैट इज कॉल्ड एज इंडक्शन तो तापाई बोली मुझे कौन कर कंडक्टर नौ है गोटे इन्सुलेटर स्टैंड उपर ठिया कर दूसरी ये लेट से गोटे इन्सुलेटर स्टैंड है ये हूँ गोटे इन्सुलेटर स्टैंड है and this is nothing but the base and आ गोटे आम कौन करा गोटे चार्ज बॉडी नवा पड़ो फिगर्स भल से बन दिए देन आफ्टर आम भल से बुझीपर से देखो आप पाखे लेट से बॉडी अच्छी बी एंड दिस इज ए है ए को मु पॉजिटिवली चार्ज बॉडी नौ है ए हूँ तुम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ठीक अच्छे एंड बी हूँ गोटे न्यूट्रल बॉडी है न्यूट्रल बॉडी माने जति नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज थी से नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज थी
ठीक अच्छे ओके फर्स्ट फिगर रे मु कौन कली ना गोटे बॉडी नेली ए दैट इज पॉजिटिवली चार्ज है एंड आ गोटे बॉडी नेली कौन न्यूट्रल बॉडी एटा होची न्यूट्रल बॉडी सेकेंडली सेकेंड स्टेप रे मु कौन करी आम पाखे जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जो ताकू कौन करी नेगेटिव चार्ज बॉडी रो कांटेक्ट पॉइंट जस्ट खाली पाखक को जस्ट खाली पाखक ने कौन हम ना न्यूट्रल बॉडी रे जो पॉजिटिव चार्ज गुड़ा से कौन हो गोटे एंड को पड़ा आसो कहीं ना रिपल्सन हम एंड जी इलेक्ट्रॉन्स से सब गोटे साइड को पड़ा आसो कहीं अट्रैक्शन हम तो किसी टाइप बन 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेपट को पड़ा आसला एंड 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेपट एंड को पड़े ठीक बुझी पारे नेक्स्टली आम कौन करवा अर्थिंग करदे आ पाखे नेगेटिव चार्ज ही था टिके था मुझे कौन करी ना थर्ड नंबर केस रे थर्ड नंबर स्टेप रे जो कंडक्टर थिला न्यूट्रल बॉडी था ताकू अर्थिंग करदेबे अर्थिंग करले कौन हम ना जो पॉजिटिव चार्ज गुड़ाक थिला गोटे एंड रे से कौन हो न्यूट्रलाइज हो केमती न्यूट्रलाइज हो ना अर्थिंग कले कौन हम ना और थ्रू इलेक्ट्रॉन्स गुड़ाक आसो एपट साइड पॉजिटिव चार्ज गुड़ा अच्छी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिसिजे प्लस माइनस होना कौन हो जगह जीरो माने टोटल चार्ज जीरो हो न्यूट्रलाइज हो से बॉडीटा माने से पार्टा बाकी रहा कौन तुम आउ गोटे पार्ट कौन अच्छी ना इलेक्ट्रॉन्स गुड़ाक अच्छा एबे कौन करवा फोर्थ नंबर केस रे फोर्थ नंबर स्टेप रे से जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी जो नहीं साइड करदे और दिनटा को हटेदे तो बॉडी सारा माने बी बॉडी पाखे कौन पड़ा आसो खाली नेगेटिव चार्ज पड़ा आसो 1 2 3 4 5 6 तो एबे बर्तमान बी बॉडीटा कौन होगा नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगा ठीक दिस इज कॉल्ड इंडक्शन मुझे कौन कली कंटाक्ट को आनी कि ना जस्ट खाली पाखक को नेली तो कौन होगा जो न्यूट्रल बॉडी थी से कौन होगा चार्ज होगा कंटाक्ट बा कंडक्शन केस में कौन देखते इन केस ऑफ कंडक्शन न्यूट्रल बॉडी एक्वायर्स the same amount of charge the same charge basically charge body we have taken but induction case टा टिके उल्टा हवा हमें जो टाइप रो चार्ज बॉडी नहीं थिबा जो टाइप रो चार्ज बॉडी नहीं थिबा न्यूट्रल बॉडी तार ऑपोजिट चार्ज ठीक अछि माने कोई लाइन टा को टिके मॉडिफाई करिके लिखि परिबी देखिबा टिके तो आम लिखा कि इन केस ऑफ इंडक्शन कंडक्शन जगह लिखिदा इंडक्शन इन केस ऑफ इंडक्शन के लिख वो लिख सारा पर तुम लिख इंडक्शन न्यूट्रल बॉडी एक्वायर्स ऑपोजिट चार्ज एक्वायर्स opposite charge of the charged body we have taken for induction for induction है तो फर्स्ट स्टेप रे हम कौन करले दीटा बॉडी नेले गोटे थिला पॉजिटिवली चार्ज बॉडी आ गोटे थिला न्यूट्रल बॉडी सेकंड केस रे कौन करले ना पॉजिटिवली बॉडी सेकेंड केस रे आम नेले पॉजिटिवली बॉडी is taken near to the neutral body
the neutral body. सेकेंड स्टेप थर्ड स्टेप रे कौन हला ना न्यूट्रल बॉडी पाखरे अलग अलग एंड को ड्यू टू पोलारिटी कौन हम पॉजिटिव चार्ज पड़ता तो जी नेगेटिव चार्ज गुड़ा गोटे साइड एंड को पड़ा आसवे आ पॉजिटिव चार्ज गुड़ा आउट साइड एंड को पड़े माने मुझे लिखिपारि सिमिलर चार्जेस repelled and dissimilar charges attracted towards ends of the conductor. And in the case of 4 आम कौन करदे 3 जाक रिमूव करदे रिमूवल of positively charged conductor, positively charged body and body ये आम अर्थिंग करते अर्थिंग द्वारा सुविधा कौन है ना ड्यू टू दिस right side end of the conductor get neutralized. ठीक है, this is all about induction. लिख लो नाम है अपोजिंग. Okay, before going to the topic fundamental properties of electric charge, टिके डिस्कस करवा कि एबे जाय हमें जोटा पढुथले कि इंडक्शन हे गला, कंडक्शन हे गला, फ्रिक्शंस हे गला. ठीक अछि. एटा द्वारा आम कौन कर पार्चे ना कौन गोटे बॉडी को चार्ज कर पार्चे. एंड तुमको कौन कहली कि आम इलेक्ट्रॉन नंबर को काउंट करवा कहीं इलेक्ट्रॉन गुड़ा ट्रांसफर होती. तो एबे कथा उठी कि इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हे. हाँ, इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हे कहीं ना जदि आम गोटे रीजन देखा ताहले प्रोटॉन जो मास अच्छी सेटा इलेक्ट्रॉन तो मास टू बहुत अधिक अच्छी है समथिंग अबाउट 1837 टाइम्स अधिक अच्छी 1837 टाइम्स अधिक अच्छी. मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक 9 × 10⁻31 kg अच्छी ताठू एटा 1837 टाइम्स 1837 टाइम्स अधिक अच्छी. तो प्रोटॉन हेवियर मास है गला इलेक्ट्रॉन कौन लाइटर मास है गला तो सेठी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो पार ये गोटे रिजन हो पारा. सेकेंडली आम जो कौन एटम को देखा तो एटम रे कौन होना न्यूक्लियस चारिपटे है इलेक्ट्रॉन्स गुड़ा रिवॉल्व कर. तो इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व हो जो सेल रिवॉल्व होती आम पूरा लास्ट सेल को पड़ेगा से कौन कह आम वैलेंस सेल कहवा. तो वैलेंस सेल रे कौन था इलेक्ट्रॉन्स गुड़ा था जो गुड़ा कि न्यूक्लियस सहित लूजली बाउंड होती. ठीक अच्छे. तो आम जो सफिशिएंट एनर्जी दे दौचे ताल कौन हम से इलेक्ट्रॉनटा ट्रांसफर हो. बट प्रोटॉन बाहर कष्ट कौन पे ना प्रोटॉन अच्छी न्यूक्लियस भितर. न्यूक्लियस भितर कौन अच्छी ना न्यूक्लियर फोर्स अच्छी. तो न्यूक्लियर फोर्स द्वारा प्रोटॉन बाउंड होगी. तो से मुश्किल हो पाए बाहर को बाहर. तो आम देखार अच्छे कौन कि इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होती जो आम कौन कर कौन बॉडी को चार्ज कर. ठीक. एवं आम जा फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को कि चार्ज रो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज कौन कौन अच्छे बेसिक प्रॉपर्टीज. ओके. सो बेसिकली फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हिसाब से चार्ज having 3 fundamental properties. That is, first one is additivity. First one is additivity. Second, quantization.
and third is conservation. ठीक अच्छे एडिटिविटी नेचर ऑफ चार्ज अच्छे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अच्छे और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अच्छे these threes are fundamental properties of electric charge एगुड़ा को हमें डिटेल्स रे गोटे गोटे करके स्टडी करबा हैला राइट डाउन हैला जीवा नेक्स्ट now the first property is additivity of electric charge additivity of electric charge kono now the total charge of an extended body is the algebraic sum of all individual charges located at the different points within it सुनो चार्ज हूँ गोटे स्केलर फिजिकल क्वांटिटी तो जदि हम पाखे गोटे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट अच्छी किसी टाइप रो एटा हूँ गोटे बॉडी ठीक अच्छे ए बॉडी भितर लेट से किसी चार्ज गुड़ाक अच्छा लाइक +2 कूलम है देन अच्छे -5 कूलम देन अच्छे +3 कूलम देन अच्छे -6 कूलम है एमती चार्ज गुड़ाक अच्छा मुझे कहबी कि ए बॉडी रो टोटल चार्ज केते हो तो तुम कौन कर दो नॉर्मली टोटल चार्ज लिखिपर आम है दैट इज व्हाट अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस स्केलर फिजिकल क्वांटिटी तो आम कौन कर अलजेब्रिक सम कर मन रख ये कौन हम ना साइन इनवॉल्वमेंट हम माने ये जदि 5 लिखे -5 तो -5 लिखा माने विथ साइन लिखा कथा मुझे कौच तो ये हो कौन +2 -6 +3 -5 केते ना +2 -6 के -4 है and -4 + 3 होची -1 -1 -5 होची -6 ठीक अच्छे एमती भी कले हाँ +3 2 5 +5 -5 0 तो -6 हम ये हूँ टोटल चार्ज कंटेन इन द बॉडी है तो ये इंपोर्टेंट जिनस लिखाई कौन यू मस्ट कैरी द साइन प्लस और माइनस ऑफ द चार्ज डूइंग एडिशन ठीक अच्छे माने मु कहि परबी इफ ए चार्ज सिस्टम a system of charge contains ना लिख दो a system contains charges plus q1 प्लस Q2 किसी टाइप से चार्ज किसी भी टाइप हो पारे तो मुझे किसी सिंबल्स दौनी है मन रख सिंबल को आम कौन इनवॉल्व करेगा है Q2 Q3 एमती करके QN चार्जेस अच्छा ठीक अच्छे एमती करके QN चार्जेस अच्छा देन इट्स नेट चार्ज कौन लिख पार नेट चार्ज कौन है पारिबो Q net is equals to Q1 plus Q2 plus Q3 एमती करके QN जोटा कि मुझे तुमको एग्जांपल देके बुझे देली है देखो कौन सी बॉडी पाखे एमती चार्जेस गुड़ाक अच्छे से आम कौन कर अलजेब्रिक सम कर ये जो प्रॉपर्टी अच्छे चार्ज रे आम कौन कहे एडिटिविटी ऑफ चार्ज और एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज ओके राइट डाउन देन आफ्टर वी विल मूव टू द नेक्स्ट देन हम देखिबा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तो एठी आमे जो फंडामेंटल चार्जेस विषय डिस्कस करबा लाइक एडिटिविटी हेगला क्वांटाइजेशन हेगला कंजर्वेशन हेगला ए सब गुडा को ना एक्सपेरिमेंट रु ऑब्जर्व होइछ हला फ्रॉम एक्सपेरिमेंट these fundamental properties of electric charge is observed from experiment it is observed है ये जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज विषय डिस्कस करते से सब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व होइछ तो एबे हमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखिबा
Quantization of charge kono the total charge q on any body is always an integral multiple of fundamental unit of charge, that is E. Fundamental unit of charge लिखि दोछु मोडी फर्स्ट रे बुझिबा कि क्वांटाइजेशन माने कोन. ओके तो फर्स्ट रे जानो कि क्वांटा मींस कोन. क्वांटा मीन्स पैकेट माने आमे कहि परिबा डिस्क्रीट पैकेट. डिस्क्रीट पैकेट फॉर एग्जांपल तुम एबे कोन करियार अछि दुकान को जिबार अछि एंड जे दुकान थियो ताको जाई कि मागिबो कि मैगी पैकेट दियो. तो से मैगी पैकेट दो तुम कहबो कि मते गोटे हाफ मैगी दियो कि 1/3 मैगी दियो से दबो कि नाही ना दबन कहीं ना मैगी पैकेट हिसाब से आसुची बुझी पारछो ना. सेमिति एक्सपेरिमेंटली जना पड़ला एक्सपेरिमेंटली एटा ऑब्जर्व हला कि एक्सपेरिमेंटली एटा ऑब्जर्व हला कि हमरो जो चार्ज ट्रांसफर होउची माने जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होउची सेटा डिस्क्रीट फॉर्म रे होउची ना कि कंटीन्यूअस फॉर्म रे होउची. डिस्क्रीट फॉर्म माने कोन गोटे दुईटा ट्रांसफर हो कि तीनटा ट्रांसफर एटा को डिस्क्रीट फॉर्म कहउछंदी बुझी पारछो ना. कंटीन्यूअस माने कोन पूरा फ्लो हेकी पड़िछो. फॉर एग्जांपल वाटर फ्लो होउची तो वाटर टा कंटीन्यूअस फॉर्म रे फ्लो होउची बुझला ना. नहीं एबे तुम जेंति कि कहि परियो कि गोटे बिल्डिंग अच्छे तो बिल्डिंग रे बहुत सारा फ्लोर अच्छे माने मु कहबी कि हाँ फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर तो एगुड़ा कौन डिस्क्रीट फॉर्म रे अच्छे गोटे गोटे हेकी अच्छे मु केबे कहबी कि हाफ फ्लोर 3/4 फ्लोर एमती केबे हेई परिबो नाही. तो दिस इज कॉल्ड व्हाट क्वांटा. क्वांटा माने कौन डिस्क्रीट फॉर्म. तो चार्ज जो ट्रांसफर होची सेटा क्वांटा हिसाब रे होची बा पैकेट हिसाब रे होची बा डिस्क्रीट फॉर्म रे होची. कंटीन्यूअस फॉर्म टा देखिया को मिले बट लिमिटेशन अछि आरो गोटे सुनो आमे एक तो चार्ज को माइक्रोस्कोपिकली स्टडी करि परिया न तो मैक्रोस्कोपिकली. एबे आमे जो स्टडी करछे माइक्रोस्कोपिकली तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो अछि सेटा केतेबेले वैलिड हो एटा होची गोटे यूनिवर्सल लॉ बट आमे देखियार अछि पर्सपेक्टिव देखियार अछि को सिचुएशन को नै कि आमे स्टडी करछे. माइक्रोस्कोपिक स्टडी जदि करछे ताहले क्वांटाइजेशन वैलिड हे परियो काई ना आमे देखि परिया हां गोटे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होछि दुईटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होछि तीनटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होछि. बट जदि मु कहबी कि गोटे कंडक्टर अछि से कंडक्टर रे ना सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करछन्ते सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करछन्ते पर सेकंड हैला तो सेठी कोन हो काउंट करे टिया प्रॉब्लम हो तो सेटा कोन हेजिबो कहलो कंटीन्यूअस फॉर्म हेजिबो. माने हमको लागे बहुत सारा करंट कोन करछन फ्लो करछन कहल ना लार्ज अमाउंट ऑफ करंट गोटे 1 सेकंड रे फ्लो करछन हमको सेटा को ऑब्जर्व करियार अछि. तो सेठी कोन हो ना इलेक्ट्रॉन सुरा केमि फ्लो करथे कंटीन्यूअस फॉर्म रे फ्लो करथे. बट माइक्रोस्कोपिकली जदि हम देखिबा जिंसटा को ताल कोन हेजिबो सेटा क्वांटाइजेशन हो बा क्वांटा हिसाब रे जीवो गोटे चार्ज ट्रांसफर हला देन आउट चार्ज ट्रांसफर देन आउट चार्ज एमती ट्रांसफर हो. तो मु कोन कहि परबी चार्ज जो छी चार्ज exist in discrete packets हैला rather than in continuous form. हैला ठीक अछि. तो मिनिमम अमाउंट केते ट्रांसफर हो परियो 1 2 एमबी हां नहीं. अच्छा से जो मिनिमम अमाउंट टा ट्रांसफर हो परछ ना सेटा कोन कहउछ हम क्वांटा बोली कहउछ बा पैकेट बोली कहउछ. मिनिमम अमाउंट माने 1 टू कम अमाउंट फ्लो कर परियो कि हाफ फ्लो कर परियो ना हम कोन कहउछ बुझ परछ ना. तो हम लिखि परिबी द मिनिमम amount by which a physical quantity can change is called quantum or quanta. ठीक अच्छे
आउ क्वांटाइजेशन रो डेफिनेशन देखले फर्स्ट रे कि टोटल चार्ज होछि हला क्वांटाइजेशन डेफिनेशन कोन ना टोटल चार्ज होछि कोनोसी बॉडी रो हला सेटा कोन हे परिबो कहलो इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज हला कोनोसी बॉडी रो हमु जदी टोटल चार्ज देखियो अछि सेटा कोन हबो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज हला ठीक अछि क्वांटा माने कोन बुझि परले माने minimum amount by which a physical quantity can change एठी physical quantity हिसाब हम कोन देखछे चार्ज को देखछे तो सेटा कोन हेजो क्वांटा हेजो तुम जति पूरा नॉर्मली बुझाउ चाहो तो बात एमिति बुझो कि गोटे बॉडी रो आ गोटे बॉडी को जो चार्ज ट्रांसफर होउची सेटा डिस्क्रीट फॉर्म रे होउची पैकेट फॉर्म रे होउची माने गोटे गोटे ट्रांसफर होउची एबेले एमिति कहि पारे ने हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हला कि 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हला सेमिति केबे हे परबो ना ठीक अछि तो हमें डेफिनेशन को मैथमेटिकली लिखि परिबा के लेखन मु डेफिनेशन रो तळुडी धरि पळा आसु एटा मे भी तळु आसीबो ना गिव मी 2 सेक तो मु पे डेफिनेशन लिखि दूची द टोटल चार्ज of a body total charge of a body is equals to integral multiple of the fundamental charge फंडामेंटल चार्ज माने कोन बेसिक चार्ज बा हमें कहि परिबा एलिमेंटरी पार्टिकल पाखरे जो चार्ज अछि एलिमेंटरी पार्टिकल लास्ट माने एबे ही डिस्कस करथिले हमें कि पार्टिकल जो एलिमेंटरी पार्टिकल सेटा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड किछि होबो तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चार्ज डिस्कस करथिले केते होतला 1.6 * 10⁻19 कूलम तो सेति की अमाउंट रो चार्ज होछि आम पे माने हमर सिलेबस पे बोली फंडामेंटल 8 आउरी एलिमेंटरी पार्टिकल्स होछन माने 8 आउरी सानो पार्टिकल्स होछन क्वार्क बोली हम सुनथियो तमे केमते सुनो तमे सुन नथो हला तमे हायर स्टडीज करे तमे जानि परियो हला ओके So the total charge of a body is equals to the integral multiple of the fundamental charge. Fundamental charge माने मु कोन कहली ना सबटो बेसिक चार्ज जोटा अछि केते हे परियो बेसिक चार्ज ता गोटे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सहित समान हे परियो हला जोटा केते हे परियो 1.6 * 10⁻19 कूलम हला जोटा कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हला जदि मु मैथमेटिकली लिखिया को चाहिबी मैथमेटिकली कोन हे परियो मैथमेटिकली let's say q is the total charge of the body that can be written as n into e n is what n is here n is integer माने हम कोन लिख परिबी बोलो इंटीजर जगह रे इंटीजर जगह लिखि देबी परिबी 0 प्लस और माइनस 1 प्लस और माइनस 2 प्लस और माइनस 3 है ना एमबे हमें लिख परिया okay q is what q is the total charge and e is what fundamental charge fundamental unit of charge लिख परिया हमें हला जोटा कि केते होबो 1.6 * 10⁻19 कूलम ठीक अछि write down then after we will move to the next ओके एबे जिबा नेक्स्ट प्रॉपर्टी ओके नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिबा पूर्व मु क्वांटाइजेशन को लेके आउट पॉइंट एट लिखि दोछि जोला कि हमें अर्लियर डिस्कस करथले कि हमें क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी को हला इलेक्ट्रिक चार्ज रो मैक्रोस्कोपिकली कोन कर परिबा इग्नोर कर परिबा
कौन पे ना सेठी कंटिन्यूअस फॉर्म रे रहबो हला एंड जदि हम माइक्रोस्कोपिकली देखु तो सेटा कोन हेजिवो डिस्क्रीट फॉर्म रे रहबो बुझि पड़छ माइक्रोस्कोपिकल आउ मैक्रोस्कोपिकल मैक्रो माने होची लार्ज स्केल रे हम कोनो जिंस को देखुचे माइक्रोस्कोपिक माने कोन स्मॉल स्केल रे देखुचे तो एबे हम जो प्रॉपर्ली स्टडी करछे ना माइक्रोस्कोपिक लेवल रे करछे ठीक अछि बुझि पड़छ ना बुझबा मन अभी आउ जदि एग्जांपल बोलसे देबी लाइक गोटे गहम अवस्था अछि है ना तो सेटा हम कोन करछो गोटे गोटे ग्रेन बाहर करछो ग्रेन माने गहम रो जो दाना अछि गोटे बाहर करछो तो सेटा कोन हेला कहलो डिस्क्रीट फॉर्म है बट मु कोन करी से बस्ता को उठेबी एंड तळे एमदी अजाडबो तो सेठी कोन हो बहुत सारा पार्टिकल्स माने बहुत सारा ग्रेन गोटे पड़ जिवो जोटा कि हमु कोन देखा जिवो कंटिन्यूअस फॉर्म देखा जिवो तो सेठी हमें गोटे गोटे देखिबा डिस्क्रीट फॉर्म करबा ठीक हो नाही सेटा मैक्रोस्कोपिकल हे गेला एंड एटा माइक्रोस्कोपिकल हे गेला एग्जांपल हिसाब रे कहूची ओके बुझि पालो देन हां लिखि दउची गुड लाइन कि we can ignore the quantization of charge when we studied macroscopical टिके रो एटा को टिके ऊपर को लिख दबा माउ तो लिख दो फर्स्ट रो एटी जगह होने तो टिके ऊपर को लिखले ही सुविधा होगा ओहो ओके ओके मैं ये ऊपर ही लिखि दूँ तुम एथरा तले लिखि दबो माने सब लिख सारा पर तले लिखि दबो हला क्वांटाइजेशन can be ignored in case of macroscopical study of charge है ठीक अच्छे मैक्रोस्कोपिकल स्टडी ऑफ चार्ज ओके चल देन जीवा हमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कौन थिला कि एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed it only can transfer from one form of energy to another form सेमिति ए चार्ज रो भी कौन थाए गोटे कंजर्वेशन लॉ थाए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन आमे कौन कहि परिबा कि गोटे सिस्टम रे टोटल चार्ज जो अछि ना से कौन रहबो रिमेन कांस्टेंट रहबो हैला तो ये लिखा है चार्ज neither be okay charge is neither be created nor be destroyed it only can transfer from one body to another body give me 2 seconds one body to another body for an isolated system where no matter enters or leaves the algebraic sum of total charge remains constant माने हम कोन कोया चाहू गोटे सिस्टम रे को टाइप रो सिस्टम हेथिबो ना आइसोलेटेड सिस्टम हेथिबो आइसोलेटेड सिस्टम रो केमिस्ट्री देखि दियो हला जोडी कोन हे पड़छ किछि भी मैटर एंटर करि पार ना हबी किबा लीव करि पार ना जे टाइप रो सिस्टम को हम कोन कोचे आइसोलेटेड सिस्टम कोचे हां ना तो आइसोलेटेड सिस्टम भितरे जो टोटल चार्ज रे कांस्टेंट रहबो अच्छा ठीक है बुझिबा आगु कि लेट्स से मो पाखरे गोटे ऑब्जेक्ट अछि वेट
এটা হচ্ছে গোটে লেটস সে গোটে সিস্টম হলা, এটা হচ্ছে গোটে সিস্টম। ওকে, এই ভিতরে গোটে অবজেক্ট ଥିଲା, এটা হচ্ছে গোটে অবজেক্ট হলা, एंड এটা হচ্ছে আর গোটে অবজেক্ট। लेट सपोज कि आ पाखरे पॉजिटिव 5 अच्छे माने पॉजिटिव चार्ज 5टा अच्छे एंड नेगेटिव चार्ज 4टा अच्छे, एमती कर दवा पॉजिटिव चार्ज 6टा अच्छे एंड नेगेटिव चार्ज 4टा अच्छे, जोटा कि बॉडी ए रे है आ बॉडी बी रे लेट से आम पाखरे पॉजिटिव चार्ज अच्छी 7टा है आ नेगेटिव चार्ज अच्छी लेट से 7टा है। ओके, एमती कहले बुझीपार तो ना बुझीपार मात्र भलसे क्लिक कर पॉजिटिव चार्ज 5टा नेगेटिव चार्ज 4टा है, पॉजिटिव चार्ज 7टा नेगेटिव 6टा लिखी ना 6टा नेगेटिव चार्ज कतटा अगेन 7टा। ओके, मु कौन करली दीड जाक बॉडी को कौन सी गोटे मेथड द्वारा चार्ज करेली है, चार्जिंग करेली। चार्जिंग करेला पर कौन हम चार्जिंग करेला पर कौन हम देखो एटा सेपटे ऊपर अछि वेट। ओके, चार्जिंग करेला पर कौन हम देखो ठीक है, बॉडी चार्जिंग करेली, चार्जिंग करला पर कौन चार्ज ट्रांसफर हम। ओके, आम देखिपे कि बी ऑब्जेक्ट जो अच्छे से बी ऑब्जेक्ट रे नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेशन अधिक अच्छे, एपटे 7 अच्छे से 4 अच्छे, तो ऑब्वियसली बी रु ए को कौन हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हम। मन कर गोटे इलेक्ट्रॉन बी रु ए को ट्रांसफर है ताले बी पाखे केतना इलेक्ट्रॉन रही 6टा इलेक्ट्रॉन रही हाँ कि ना। ओके, एंड ए पाखे केतना इलेक्ट्रॉन रही 5टा इलेक्ट्रॉन हो ठीक। एबे कौन करवा सिस्टम रो टोटल चार्ज देखिए। चलो एठी सिस्टम थिला बिफोर चार्जिंग ए केस रे एंड दिस इज सिस्टम आफ्टर चार्जिंग है, लिखि दो आईडी बिफोर चार्जिंग एंड दिस इज सिस्टम आफ्टर चार्जिंग है। एबे टिके नेट चार्ज काउंट कर दवा है, कांस्टेंट रूल्स ने देखियो देखो ऑब्जेक्ट ए पाखरे टोटल चार्ज केते अछि 6 4 प्लस 6 माइनस 4 प्लस 6 माइनस 4 केते आसीबो प्लस 2। बी पाखरे केते अछि प्लस 7 माइनस 7 प्लस 7 माइनस 7 दैट इज 0। टोटल चार्ज केते होला प्लस 2 माना ए जो टोटल चार्ज 2 देखो एटा कहार चार्ज सिस्टम बिफोर चार्जिंग है। एबे हमें सिस्टम आफ्टर चार्जिंग को देखिबा ए गुडी देखो प्लस 6 है एंड दिस इज माइनस 4 केते पड़ आसीबो प्लस 1। बी को देखो प्लस 7 देन माइनस 6 केते हिजबो प्लस 1 है केते आसीगला एटा 2 है पूर्व केते आसला सेम ही आसला ना लिखि दूची तो मन रहे देखो एट थिला कोन प्लस 6 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 2 एंड प्लस 7 माइनस 7 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो टोटल चार्ज केते हेला 2। एबे कौन करे अछि सिस्टम देखिया अछि कि आफ्टर चार्जिंग कोन थला देखो 6 प्लस 6 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 1 देन 7 माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू 1। टोटल चार्ज केते गेला 2। देखो सिस्टम रो चार्ज कोन रहला कांस्टेंट रहला। हाउएवर भितरे कोन होची बॉडी रे चार्ज चेंज होची बट सिस्टम रो चार्ज कोन होची कांस्टेंट होची। कथा बुझी पालो मैं कोन कहय चाहूची ना बुझी पालो मैं कोन कहय चाहूची बुझी पालो। ओके, सो आम कहि परिबा कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज अछि हला दैट कैन neither be created nor be destroyed, it only can transfer from one body to another body। सेकेंडली आम कौन कहि परिबा फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम हला जो टोटल चार्ज से कौन रहबो कांस्टेंट हला। सो दिस इज ऑल अबाउट चार्ज माने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। लिख सर देन आगु जबा आगे गोटे लाइन लिखिपारि टोटल चार्ज
এটা एग्जांपल हिसाब लिख दो total charge in the universe is constant. Can we assume universe is a system? तो universe को यदि हम system हिसाब से assume करें तो universe का charge कौन है जो total charge constant. Total charge in the universe is constant. Hello. Okay. Next comes to invariance of electric charge. Invariance of electric charge. Invariance of electric charge कौन? Now the magnitude of charge on a particle does not change regardless of how fast the particle is moving. सुनो आमे दुईटा प्रॉपर्टी माने दुईटा कौन से बड़ दुईटा प्रॉपर्टी देखथिले गोटेला इलेक्ट्रिक चार्ज और गोटेला मास मास जो रहे से कौन हुए चेंज हो पारे जिते बड़े कि आम कौन कह पारे कि बॉडी ट्रैवल करछि विद द स्पीड माने मास जो अच्छे से बॉडी रो स्पीड ऊपर डिपेंड करे बट चार्ज होछि एमती गोटे प्रॉपर्टी जे कि बॉडी रो स्पीड ऊपर डिपेंड करे नाही बुझि परछ ना बुझि पाउनो मास डिपेंड करछि स्पीड ऊपर कि स्पीड जदि बढ़ुछि ताले मास भी इंक्रीज होबो माने अकॉर्डिंग टू स्पीड मास इंक्रीज हुए हला तुम देखि दिबो कौन कहते रेस्ट मास अच्छी है आउ जो वेरिएशन आसूची मास से गोटे एक्सप्रेशन थी मन थी एम इज इक्वल्स टू एम नॉट डिवाइड बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर है ना ओके तो से केस रे कोन होतला कहलो ना स्पीड हिसाब रे मास चेंज हो पड़थि बट चार्ज केस रे कोन हबो किछि भी चेंजेस होबो ना हला इलेक्ट्रिक चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन the speed of the body mind it fix करके रखो mass depend करूची speed of the body ऊपर depend okay and charge जो होचे से speed of the body ऊपर depend करू नहीं regardless से कितने भी fast जाओ charge कौन रहेगा constant रहेगा तो मैं ऐसे लिखी परिवी कि charge does not depend upon speed of the body charge does not depend upon speed of the body okay charge does not depend upon speed of the body ठीक एठी आमे आ गोटे टॉपिक हेले देखिबा दैट इज व्हाट ना आमे दीटा प्रॉपर्टी देखले बॉडी रो कि मास और चार्ज हला तो समान भीतर डिफरेंस कोन कोन रहि पारे मास और चार्ज भीतर डिफरेंस कोन कोन अछि डिफरेंस between mass and charge एपट साइड रे मास विषय लिखि दउछु एंड एपट साइड रे चार्ज विषय लिखि दउछु फर्स्ट पॉइंट देखिबा हमें मास जो अछि ना तार वैल्यू सब पॉजिटिव रहबो बट चार्ज रो वैल्यू पॉजिटिव हे पारे नेगेटिव हे पारे जीरो हे पारे सो हम लिख पारे मास इज ऑलवेज पॉजिटिव है जो चार्ज अच्छी चार्ज मे बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो किछ भी सेकेंड प्रॉपर्टी हमें देखिबा चार्ज जो अछि से क्वांटाइज्ड नेचर शो करे जस्ट हमें देखिले हला चार्ज इज क्वांटाइज्ड मास केस रे सेटा बजाय एस्टैब्लिश हेइनी क्वांटाइजेशन ऑफ मास is not yet established okay next property देखियो हमें
चार्ज जो कंजर्व अच्छी है चार्ज कौन है कंजर्व हो पारे बट मास जो अच्छी मास कंजर्व हो पारे चार्ज is conserved mass is not conserved by itself एबे देखो चार्ज कंजर्व हो यार मीनिंग कोन कहलो चार्ज माने देखो एबे हम जेमि कि कंजर्वेशन लॉ देखले सिस्टम भितर चार्ज कोन होतला ट्रांसफर होतला तो चार्ज ट्रांसफर हेकी गोटे बोर्ड आउटे बोर्ड को जाउतला मास केस रा सेमि किछि हे परियो मास किंतु एनर्जी को ट्रांसफर हो परियो एनर्जी फॉर्म को ट्रांसफर हो परियो एनर्जी रो मास फॉर्म को आस परियो तो सेटा को मास एनर्जी इक्विवेलेंस कहयो मास एनर्जी कंजर्वेशन कहयो खाली मास रे कंजर्वेशन होबो नै के बुझला माने मु कहि परिबी मास कैन बी transformed into energy or vice versa है नीचे किंतु चेंज हो मास चेंज है कि देन आउट मास बनला सेमती होनी है चार्ज किंतु कंजर्व हो पारे आ गोटे लाइन लिखुची सो इंपोर्टेंट लाइन व्हाट इज दैट ए चार्ज्ड बॉडी always possesses some mass. A charged body always possesses some mass. But हमें कौन कोई परिवा a body possessing mass may not have any charge. Statement of also बड़ा कौन कहली कि a charged body always possesses some mass. जदि बॉडी चार्ज अच्छी माने बॉडी पाखे चार्ज अच्छी मास निहाती थी बट एमती आम कहीपर कि जब गोटे बॉडी पाखे मास अच्छी पाखे डेफिनेटली चार्ज है कहीपर फॉर एग्जांपल देख प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन देख प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पाखे चार्ज अच्छी हाँ नहीं केते अछि प्लस 1.6 into 10 to minus 19 कूलम प्रोटॉन पाखे अछि इलेक्ट्रॉन पाखे अछि केते minus 1.6 into 10 to minus 19 कूलम एबे आसो न्यूट्रॉन पाखे चार्ज अछि ना न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल बट तार मास अछि ना नहीं मास अछि ठीक अछि तो मास रहिबो बोले चार्ज रहिबो बोले किछ समझी कहि परियानी किंतु जदि चार्ज अछि ताले निहाती मास थिबो कथा बुझि पालो ए बॉडी शुड कंटेन ऑलवेज मास इफ दैट हैविंग सम चार्ज but जदि बॉडी पाखे मास अच्छी इट पोजेसेस मास बट इट मे नॉट हैव चार्ज बुझा पड़ला एति लिखि दियो ना आगु जो नेक्स्ट हम पाखे किसी प्रॉब्लम्स अच्छी करिया पे तो प्रॉब्लम्स किसी देखिबा आबे आर यू रेडी तो पॉज करके एबे जे जहाँ भी पढ़े आम टे रिवाइज कर दियो है देन आफ्टर आम प्रॉब्लम स्टार्ट करें लेट्स गो फर्स्ट प्रॉब्लम्स पढ़ मो सहित कौन लिखाई ए पॉलिथीन रॉड इज रॉब्ड विथ वूल पॉलिथीन रॉड इज रॉब्ड विथ वूल पॉलिथीन रॉड मीन सब प्लास्टिक रॉड रखू वूल रे मो कौन कली एमडी घसी है एमडी घसी एंड एक्वायर्स ए चार्ज ऑफ minus 4.8 into 10 to the minus 7 coulomb ए चार्ज के एक्वायर करला ए पॉलिथीन रॉड एक्वायर करला हला जते बेले कि वूल सहित से रॉब होता कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड टू द रॉड तो रॉड वूल सहित रॉब करला कौन कला ना माइनस 4.8 इंटू 10 to the minus 7 coulomb चार्ज ना सॉल्यूशन देखिबा टिके है तुम जो चाहो तो पज करके निजे ट्राए कर निजे ट्राए करके देन जो सॉल्यूशन देखिए ताहले बेसी भल से बुझा पड़े ना फर्स्ट ट्राए करिया कथा निजे ठीक अच्छे ओके सी केतिकी चार्ज एक्वायर कला रॉड कहलो
क्यू आर बोली लिखुचे क्यू आर मीन्स व्हाट चार्ज ऑफ रॉड केते एक्वायर करला -4.8 इंटू 10 टू द पावर -7 से कौन पचार ना आमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पचार कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स केतिकी रॉड पाखु जाइथिबो देखो एटा गोटे रॉड अछि आउ पुल अछि तो रॉड जदि नेगेटिवली चार्ज हला केम जानले नेगेटिव चार्ज हला बोली आगर नेगेटिव अछि तो जदि एटा नेगेटिवली चार्ज हला ये पॉजिटिवली चार्ज हेतिबो ना हेनथिबो ऑफ कोर्स कंजर्वेशन हला आप अगर जति नेगेटिव रहबो आवर जति पॉजिटिव रहबो अच्छा तो ऑब्वियसली पूल टू कौन हो किसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर आसते केतिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर आसते ना n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर आसते से n नंबर रो वैल्यू हमको बाहर कर अछि तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन हम कौन पढ़थिले q इज इक्वल्स टू n इनटू e तो n इज इक्वल्स टू कौन हिसबो q डिवाइड बाय e एडी q केते अछि -4.8 इनटू 10 टू द -7 डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होची तो लिखि दबा इलेक्ट्रॉन रो चार्ज केते -1.6 इनटू 10 टू -19 कूलम हैला एटा को हम कोन करबा बर्तन काट दबा देन केते रहि जो देखो ये अछि 16 से 48 कैलकुलेट करो केते होची 0.3 हैला 0.3 इनटू 10 टू -7 -19 टा ऊपर गोला तो कोन हे जिवो +19 -7 केते आसीबो +12 हैला तो एतिकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोन हेगला ट्रांसफर हेगला ओल टू रॉड ठीक अछि देन जिबा आगु नेक्स्ट क्वेश्चन a glass rod is rubbed a glass rod is rubbed wait a glass rod is rubbed with a silk okay এটা আমি কোন প্যান্ট ড্র করব যেমনি মজা মজা A glass rod is rubbed with silk and acquires a charge of +3.2 10 to -19 coulomb -9 coulomb. What is the charge on silk? Charge on silk कौन हो? Again, rod अब कौन थिला silk थिला rod को हमें कौन करले silk से रब करेले तो rod केते के एक्वायर करलो ना +3.2 into 10 to -19 coulomb charge ताले silk कौन करथिबो नेगेटिव चार्ज के एक्वायर करथिबो होंगे नेगेटिव 3.2 into 10 to -9 coulomb ठीक अछि व्हाट इज द चार्ज ऑन सिल्क जान देले हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क जदि सिल्क ता नेगेटिवली चार्ज हेछि ताहले ऑब्वियसली रॉड रो कोन हेतिबो सिल्क कार्ड को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हेतिबो तो पचार जे केतिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हेछि तो केन लिखिबा n इज इक्वल्स टू q डिवाइड बाय e तो q जदि लिखु छ हमें 3.2 into 10 to -19 coulomb सॉरी एटा केते अछि -9 कूलम अछि हला डिवाइड बाय जब तुम माइनस न हो ताले इलेक्ट्रॉन रो भी चार्ज जो लिखिबो तरा माइनस लिखिबो 1.6 into 10 to -19 कूलम हला ठीक अछि एबे हम कोन करदबा काट कुट कर दबा हला केते हिजबो 0.2 हां into 10 to -9 अछि एटा +19 ऊपर पड़े जिवो तो ये जिवो एतिक नंबर ऑफ चार्ज कोन करबो ट्रांसफर करबो हला फ्रॉम ग्लास रोड टू सिल्क जिवा गुगु कैन a body have a charge of 4.0 माने 4 का 10 to -20 कूलम अच्छा जस्टिफाई योर आंसर विद द रीजन ठीक से पचार कि चार्ज टा 4 into 10 to -20 कूलम हेई परिबो ना हेई परिबो ना केम जानिया क्वांटाइजेशन को मन पका कौन कही कि जो चार्ज ट्रांसफर होची से चार्ज ट्रांसफर जो होची सेटा क्वांटा हिसाब रे हो माने हमें लिखि परिबा q इज इक्वल्स टू n into e यदि टोटल चार्ज लिखिबार अछि कोनोसी बॉडी रो ताल से कोन होबा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज होबा तो एठी हम कोन करिया पड़िबो n बाहर करके लिखिया पड़िबो चलो लिखियो q अछि माने q गिवन अछि n बाहर करी लिखिबा केते होबो q by e q अछि 4 into 10 to -20 आ हमरो e होछि केते 1.6 into 10 to -19 कूलम हो ना
10 द माइनस 19 कूलम उपरू नहीं जावा कोन हो देखो एटा हम जदी काटुचे 4/16 लिखि दूची मु एठी हला जदी मु एठी 1.6 हटे की हला 16/10 लिखि देबी ताले कोन होबो एटा 10 द पावर -20 हे जिवो कोन कहूची बुझछ ना बुझना एठी पॉइंट हटे देली माने 16/10 थिला से 10 टा ऊपर आसीबो है ना -19 टा कोन हो -20 हला तो ये कटि जिवो बाकी रहला 4/16 कले केता आसीबो 0.25 तो 0.25 टा गोटे इंटीजर की नहीं ताहले ये जो चार्ज आमे लिखचे ये चार्ज टा एग्जिस्ट करियो नहीं डज नॉट एग्जिस्ट तो जानली केमती ना एठी जदी हमर n टा इंटीजर आस्थांदा एठी आसला कि 0.25 आसला 1/4 आसला दीज आर नॉट इंटीजर्स तो इंटीजर जदी आस्थांदा हम कहते हैं कि हां ये चार्ज गो रहियो बोली हैला तो जेहेतु इंटीजर आसला ने हम कोन कहबा ये एग्जिस्ट करनी दिस इज द रीजन Next was two identical metal spheres A and B having charge plus 4 into 10 to the minus 6 coulomb and minus 2 into 10 to the minus 6 coulomb are brought into contact and then separated. What is the charge on each sphere after contact? Okay. तो हम पाखरे गोटे body अछि. This is A. This is a body. अरे जो ये होची गोटे बॉडी ए हैला एंड आउ गोटे बॉडी होची लेट्स से बी हैला आपण कोन करबा ना एदिरा को कांटेक्ट कानिबा कांटेक्ट को आनिबा हैला कांटेक्ट को आनले हैना तापर कोन कर देले सेपरेट कर देबा सेपरेट कर देबा तो से कहूँ कि सेमान को पाखरे चार्ज केते रहिबो हैला ओके चार्जेस before contact and this is contact between charges and this is charges after contact ओके अब अगर चार्ज ला +4 into मोई कहि दो तुमको केमि कोन करिया अछि लेट्स से अब अगर प्लस q चार्ज थांदा आप अगरे माइनस क्यू चार्ज था हला क्यू तो सेम ना दीडी ना तो Q1 Q2 लिखि कुछ हला ओके समान को जेतले तमे कोन करबो ना कांटेक्ट को आनिबो ठीक अछि तो समान रो एवरेज बाहर करिबो जति कि एवरेज बाहर ना सेगुडा को सब आप अगरे चार्ज हो लाइक लिखि परि हम कोन +Q1 -Q2 डिवाइड बाय 2 सिंपल एटा हिजो +Q1 -Q2 डिवाइड बाय 2 हला ठीक अछि तो से हिसाब जदि हम देखिबा तो बेटा +Q1 केते अछि +Q1 अछि हमरो 4 into 10 to -6 कूलम हला एंड -Q1 अछि केते -2 into 10 to -6 कूलम हला एबे सेमान को कांटेक्ट को आनले तो सेमान को एवरेज बाहर करियो एवरेज कोन होबो ना Q1 + Q2 डिवाइड बाय 2 हला Q1 जगह कोन लिख दो 4 into 10 to -6 हां देन Q2 जगह लिख दो -2 into 10 to -6 डिवाइड बाय 2 एटा कोन लिखले हम बेसिकली एवरेज बार को लेडी हला ठीक अछि देखो 10 to -6 अछि एठी एंड 10 to -6 तो कॉमन काट दो से हिसाब देखियो गेले कोन हो 4 - 2 कर दे परबा 4 - 2 बोले आसीबो के 2 डिवाइड बाय 2 into 10 to -6 लेकिन पड़ा सी 10 to -6 कूलम तो आप आखिर आसीबो 10 to -6 कूलम आप आखिर आसीबो 10 to -6 कूलम हला बुझि पारले जदि एमिति मेटल्स को कोन करिया कोछ ना कांटेक्ट को आनी कि देन ओकर सेपरेट करिया अछि देन तापर केते चार्ज अछि पछरे जदि हम एमिति बाहर करि पारे एट द एंड आई वांट टू से थैंक यू कि तमे समस्त कोन करलो ना वीडियो को देखिलो भलसे एंड आई होप कि सब जिनस भलसे बुझा पड़थिबो सो आज मैं दी था पुणी भेट नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक टिल देन कीप लर्निंग